Ahmedabad constituency of Gujarat. Miss Aditi, please. Ma'am, would you like to take oath or affirmation? In which language, ma'am? હું સુશ્રી આદિતિ ડોડિયા યુવા સંસદની લોકસભાના ચૂંટાયેલા સભ્ય ભગવાનના નામે શપથ લઉં છું કે હું દેશના સાર્વભૌમત્વ અને અખંડતાને જાળવી રાખવા અને કાયદા દ્વારા સ્થાપિત ભારતના બંધારણમાં વિશ્વાસ અને નિષ્ઠા રાખીશ. જે ઓફિસમાં હું દાખલ થવાની છું ત્યાં હું મારી ફરજો નિષ્ઠાપૂર્વક નિભાવીશ. Mr. Pranav, who stands elected from Nashik constituency of Maharashtra. Mr. Pranav, please. Sir, would you like to take oath or affirmation? In which language, sir? मी प्रणव वैशाली येगावकर ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी संघ राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव व आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईन. Miss Brahmori, who stands elected from Kolkata constituency of West Bengal. Miss Brahmori, please. Ma'am, would you like to take oath or affirmation? In which language, ma'am? अहं ब्रह्मोरी चाटर्जी लोकसभाया सदस्य तेवल निर्वाचितः निश्चयेन परमेवरस्य नामनाशय यदा अहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयन् तथा कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वक निर्वक्ष्यामि. Honorable members, as we meet today, it is my sad duty to inform you of the demise of one of our colleagues, Shri Girish Bapat, who passed away on 29th March at the age of 72 years. He was also a member of Parliament from 2019 to 2023. He was also MLA from 1995 for consecutive 5 years. In his death, the country has lost a distinguished parliamentarian, an able administrator, and a dedicated social worker. We deeply mourn the passing away of Shri Girish Bapat. May his soul rest in peace. मैं श्री गिरीश भालचंद्र बापट के असामयिक निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ. श्री गिरीश भालचंद्र बापट एक अत्यंत लोकप्रिय जमीनी राजनेता थे. वे युवावस्था से ही जनसेवा में सक्रिय थे. वे भारतीय जनता युवा मोर्चा से भी जुड़े थे. वे पुणे के कस्बा पेट से 1995 से लगातार 5 बार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए. वे देवेंद्र फडणवीस सरकार में भी मंत्री थे. उनका देहावसान अपूर्णीय क्षति है. मैं श्री बापट के निधन समाचार से अत्यंत मर्माहत हूँ. रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई. महोदया, मैं आप और सदन के नेता द्वारा अर्पित की गई श्रद्धांजलि में अपने आप को भी संयोजित करती हूँ. श्री गिरीश बापट जी, उनके निधन से हमने एक योग्य नेता और एक प्रतिभाशाली समाज सेवक खो दिया.
देश सदैव उन्हें एक कौम सम्राट के रूप में याद रखेगा। मैं शोक संतप्त परिवार को संवेदनाएं भेजने में स्वयं और अपने दल को संयोजित करना चाहूंगी। The House will stand in silence for a minute to express our sympathies. Secretary General, please make note to send the family the House's condolences. Prime Minister to introduce the new ministers. Madam, I have the pleasure of introducing to you and through you to the House and my colleagues, two of my new ministers, Kumari Kumanshi, who is the Minister for Textiles, while Kumari Samisha, who is the Minister for Sports and Youth Affairs. Question number 102. Kumari Anvika, please. Speaker, madam. Speaker Madam, will the Minister of Education be pleased to state how is the government planning to adapt and update National Education Policy NEP 2020 to address the changing, and I underline, changing educational needs and challenges in the future? Question A. Whether NEP 2020 is just a document on paper or has it been effectively implemented on ground? And can the government provide a progress report on its implementation so far? Question B. Could the government please provide insights on how NEP 2020 is in harmony with the Sustainable Development Goals SDGs, particularly Goal 4? Question C. Could the government explicate on how NEP 2020 will make India a global hub of quality education? I repeat, a global hub of quality education. Minister of Education, please. Speaker, madam. Answer to question A. The National Education Policy 2020 is not merely a document on paper. Significant efforts have been made for implementation of its provisions on the ground. NEP 2020 focuses on creating well-rounded individuals equipped with key 21st century skills. However, it's essential to understand that implementation of such a comprehensive policy will take time. Answer to B. Madam, the Indian government has taken significant steps to align NEP 2020 with the Sustainable Development Goals, especially Goal 4 for quality education, equitable access, affordability, and reducing disparities. These efforts position NEP 2020 as a key tool in achieving SDG 4 objectives, especially in the realm of education. Answer to question C. NEP 2020 envisions making India a global hub of quality education through curriculum reforms, research emphasis, technology integration, and international collaborations. The new policy is both national and international, innovative and interactive, and is built on the cornerstone of equity, quality,
Madam, the time has come for India to emerge as the Vishwa Guru and once again become the hub of knowledge and innovation. Thank you, ma'am. Question number 105. Kumari Rachel. Well, current trains barely managed to run on time. The railway minister dreams of hydrogen-powered vehicles. How about fixing the tracks before planning a hydrogen escape? Madam, please come to the point. Yes, ma'am. Question A. Whether the development of hydrogen-powered trains is in line with the government's green growth mission. And I underline green growth mission. If so, the details thereof. Question B. Whether the government has started the development of the first bullet train in the country, or is it also in development? If so, the details thereof as well. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Minister of Railways, please. Honorable Speaker, Madam, India will roll out hydrogen trains on its heritage routes from December 2023, keeping in line Green Growth Mission. I underline Green Growth Mission. Indian Railways has envisaged 35 hydrogen trains under Hydrogen for Heritage. I underline under Hydrogen for Heritage at an estimated cost of 80 crores per train and on ground infrastructure 70 crores per route. With this initiative, Indian Railways is taking a significant stride towards embracing more innovative and eco-friendly technologies. In a remarkable move, Indian Railways has awarded a pilot project worth 111 crores. I repeat, a pilot project worth 111 crores for retrofitting hydrogen fuel cells. Hydrogen trains hold immense potential in dramatically reducing carbon emissions by taking a crucial step towards more environmentally friendly future. Addressing to question B, yes, madam, the government has sanctioned its first high-speed rail corridor between Mumbai and Ahmedabad in December 2023. Addressing to question B, yes, madam, the government has sanctioned its first high-speed rail corridor between Mumbai and Ahmedabad in December 2015. India's inaugural high-speed rail project, the Mumbai-Ahmedabad High-Speed Railway Project, is now underway, revolutionizing transportation. Question number 130. Kumaratharma, please. Honorable Speaker, Madam, with the Minister of Earth Sciences, we please to start. A. Whether the government is aware that India is one of the few countries which is at greatest risk of experiencing rising sea levels worldwide and subsequently an increased risk of flooding. If so, the steps the ministry has taken to enhance resilience against climate change. Point B. The steps the ministry has taken to enhance resilience against climate change for extra vulnerable states like Andhra Pradesh. I underline Andhra Pradesh, which has the second longest coastline. My last point, government's plan to invest in national projects like application of space technology to obtain real-time information for major disasters like floods and cyclones. And if so, the details thereof. The Minister for Science and Technology and Earth Sciences. Yes, madam. Based on the scientific studies and the recent climate assessment reports of the Ministry
Ministry of Earth Sciences, the sea level in the Indian Ocean was observed to be rising at an average rate of about 1.7 millimeters per year with 3.3 millimeters per year in the recent decades, that is from 1993 to 2015. Now, NCCR, that is our National Center for Coastal Research, an attached office of the Ministry of Earth Sciences, has developed a WebGIS-based digital atlas. I underline NCCR has developed a WebGIS-based digital atlas, namely National Shoreline Atlas System, wherein the shoreline changes, erosion, abrasion hotspots are identified periodically, and this information is provided to the coastal states for coastal mitigation activities. Answer to question B. Yes, madams, I would like to mention a few steps taken by the government to enhance resilience against changing climate and rising sea levels along the Indian coast, including Andhra Pradesh coastline. Point number 1, Indian National Center for Ocean Information System has carried out CVI, Coastal Vulnerability Index, mapping to assess the probable implications of sea level rise along the Indian coast, including the coastline of Andhra Pradesh. Point number 2, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change has commissioned a study to assess the extent of the effects of changing climates and rising sea levels on the Andhra Pradesh coastline. Answer to question C. Yes, madam. National projects on application of space technology to obtain near real-time information on major disasters like floods and cyclones are already existing. Under the Disaster Management Support Program, ISRO is continuously monitoring and providing a near real-time space-based inputs on disasters such as floods and cyclones. Also, the NCCR has developed flooding warning systems, that is iFlows, using space technology. And I would proudly like to mention that such system is operational for 2 coastal cities, namely Chennai and Mumbai. I thank you, madam. Yes, you may proceed. Honorable Speaker, madam, in what manner will the government ensure that the Samudran project is not destructive and invasive to the sensitive underwater ecosystem? Answer to the supplementary question. The Samudrayan project is aimed to send 3,000 personnel to 6,000 meter depth in a submersible to study deep sea resources and do biodiversity assessment. As the project is sent in a submersible, the project will not harm the ecosystem by any means at all. Question number 140. Kumaradi, please. Speaker Madam, will the Minister of Tourism be pleased to state A. The proposal of the government to deal with expected increase of 12%, I underline 12% in inbound tourism in the country in the year 2023. If so, the details thereof, and if not, the reasons therefore. B. Whether the government has taken any steps to streamline processes like visa approval in the tourism sector to ensure the best utilization of India's tourism potential. If so, the details thereof, and if not, the reasons therefore. Minister of Tourism, please. Honorable Speaker, madam, Ministry of Tourism promotes India as a holistic destination to promote various Indian products
and tourism destination to increase the global share of tourism market in India. Further, augmenting infrastructure, easing of visa regime, assurance of quality standard, projection of country as a 365-day tourist destination, promotion of sustainable tourism, etc. have worked to increase global tourism in India. Further, in order to boost visitors' arrival, the Government of India has declared Incredible India Visit India 2023. In year 2022, India recorded foreign tourist arrival of 6.19 million with a growth of 300.5% over same period of the previous year, which accounts for foreign exchange earning of rupees 1,35,543 crore with a growth of 106.77%. B. The facilitative visa regime is a prerequisite to increase inbound tourism. The Ministry of Tourism takes the initiative with the Ministry of Home Affairs and Ministry of External Affairs for achieving the same. At present, e-visa facility is being extended to 167 countries under 5 subcategories. That is e-tourist visa, e-business visa, e-medical visa, e-medical attend visa, and e-conference visa. The latest country added is Morocco. The e-visa facility is valid to 29 designated airports and 5 designated seaports. One supplementary question, please. You may proceed. Speaker Madam, whether gambling due to addiction to internet games is causing heavy financial loss to the youth and their parents. If so, the details thereof, along with the reaction of the government thereto, and whether the government has received any complaints in this regard. If so, the details of such, including the complaints received from these states. Minister of State for Electronics and Information Technology. Speaker Madam, betting and gambling are listed as state subjects under entries 34 of List 2 in 7th Schedule of Constitution of India, thereby giving states the power to legislate in this domain. Accordingly, states and union territories have enacted their laws to deal with gambling, including online gambling within their specific jurisdictions. This ministry locks apps and URLs, including online games, based on the specific requests received from the designated nodal officers, on the grounds of integrity and sovereignty of India, defense of India, security of the state, friendly relationship with foreign states, public order, and to prevent incitement of the commission of any cognizable offense relating to the above circumstances, following due process specified in the Information Technology Rules, notified under Information Technology Act 2000. This ministry has received complaints on the same lines as above in the form of grievances from the Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Honorable Governor of Puducherry, and some honorable members of the Parliament. No more questions, please. The question hour is over. अब शून्यकाल आरंभ होने जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मुझे मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश में इस बार कुदरत की मार खेती और बागबानी पर बुरी तरह बढ़ी है। इस वर्ष सेब का उत्पादन पिछले वर्ष से लगभग आधा होने की संभावना है। वर्ष 2022 में 3.36 करोड़ पेटी सेब का उत्पादन हुआ था और इस वर्ष मुश्किल से 1.75 करोड़ पेटी होने का अनुमान है। महोदय, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि
और असमय बर्फबारी ने उत्पादन को न्यूनतम कर दिया। अतिवृष्टि से बागों को नुकसान पहुंचा है। सड़कें बहने के कारण ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कतें आ रही है और गवर्नमेंट ने पैकेजिंग पर 15% जीएसटी लगाया है। कुल्लू, किन्नौर, शिमला, मनाली के उच्च क्वालिटी के सेब स्थानीय बागों में कौड़ी के भाव बेचने को किसान मजबूर है। सभापति महोदय, मैं भर्ती परीक्षाओं एवं प्रवेश परीक्षाओं में फर्जीवाड़े, नकल, धांधली आदि को रोकने के लिए सरकार से सख्त उपाय करने की मांग करता हूँ। परीक्षाओं एवं चयन प्रणाली में पारदर्शिता का अभाव है। सुशासन दुशासन बना हुआ है। भ्रष्टाचार, नकल की शिकायत करने पर बेगुनाहों को पीटा माना जाता है। हो गई हर धार पर पूरी व्यवस्था, शोक से डूबे जिसे डूबना है। हो गई हर धार पर पूरी व्यवस्था, शोक से डूबे जिसे डूबना है। दोस्तों, अब मंच पर सुविधा नहीं है। दोस्तों, अब मंच पर सुविधा नहीं है। आजकल नेपथ्य में संभावना है। महोदय, प्रतिभा में पाबंदी लगाना ठीक नहीं है। सरकार बेरोजगारी को बढ़ा रही है। महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों की दुश्वारियां सदन को बताना चाहती हूँ। 1. प्रतियोगी परीक्षाओं का पूर्व निर्धारित कैलेंडर नहीं होता। 2. ऑनलाइन परीक्षाओं की तिथि व सेंटर परीक्षा के 2 या 3 दिन पूर्व बताए जाते हैं, जिससे प्रतिभागियों को परीक्षा की तैयारी करने व परीक्षा में शामिल होने में बहुत मुश्किल आती है। नहीं, कृपया। Dated 21st December 2020. SO 145E, published in the Gazette of India, dated 4th Feb 2015, authorizing the Geological Survey of India to carry out such detailed investigations that may be necessary in the areas specified in the table annexed to the notification. Thank you. Madam, I beg to lay on the table. Minister of Chemical and Fertilizer, please. Madam, I beg to lay on the table a copy of the annual accounts in Hindi and English of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research, SES Nagar, for the years 2021 and 2022, together with an audit report thereon. Yes, please. Madam, the great famous city of Mumbai is up for sale. Every rule in the book is being flouted and twisted to line the pockets of builders and their political patrons. Mumbai's leading newspaper has reported that the government of Maharashtra is unabashedly giving off lands to the builders and developers in the name of sale of government land, which is nothing but just a big scandal. क्या आपने इससे पूर्व सूचना दी थी? Yes, madam. I had given the notice for the same early today by 10 a.m. यह विषय मेरे संज्ञान में अब तक नहीं आया है। जब ये मेरे पास आएगा, मैं विचार करूंगी। आप इस घटना की विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध कराएं और मेरे निर्णय लेने तक बैठ जाएं। थैंक यू मैडम। महासचिव, युवा संसद की राज्यसभा से प्राप्त संदेश को पढ़िए। महोदया, मुझे युवा संसद की राज्यसभा के महासचिव से प्राप्त संदेश की सूचना देनी है। युवा संसद की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विभाग के अनुसार मुझे अवैध आव्रजन विधेयक 2023 की एक प्रति सभा पटल पर रखने का निर्देश हुआ है, जो राज्यसभा द्वारा 2023 में पारित किया गया था। महासचिव, राज्यसभा द्वारा पारित विधेयक की एक प्रति सभा पटल पर रखी।
महोदया, मैं राज्यसभा द्वारा पारित किए गए अवैध आव्रजन विधेयक की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। सदन को यह सूचित करते हुए मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है कि आज हमारे मध्य विदेशी अतिथियों का एक दल उपस्थित है, जिसने हमारी संसदीय कार्यवाही देखने और अपने साथ उसका अनुभव ले जाने का अनुरोध किया है। मैं जापान के सायुरी, सेनिची और सेंजीरो का स्वागत करती हूँ। हम सभी उनके सुखद एवं सफल ठहराव की कामना करते हैं और अपने देश के लोगों की तरफ से उनके देशवासियों को शुभकामनाएं देते हैं। आपका और आपकी टीम का हार्दिक स्वागत है। यह हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे अतिथि हैं। अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की बारी है। कुमारी आशिका कृपया ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करें। चंद्रयान की सफलता का मॉनसून के आने से भला क्या संबंध हो सकता है? प्रतिपक्ष के एक साथी ने कहा, आप गांव जाइए तब देखिए। मैं गांव में ही रहता हूँ। मेरी पिछली 7 पीढ़ियां किसानी का काम करती आई है। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ। हमारी सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील है। सूखे व बाढ़ दोनों स्थितियों में किसानों की मदद की सफल योजनाएं बनाई गई है। राजस्व एवं भूलेख अधिकारियों को किसानों के वास्तविक नुकसान की गणना करके क्षतिपूर्ति देने का निर्देश है। सिंचाई की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार और सिंचाई विभाग को प्रत्येक राजभवों के टेल तक पानी पहुंचाने का आदेश दिया गया है। नहरों की सफाई एवं देखरेख के लिए गांव में मनरेगा एवं जल समितियों को जिम्मेदारी दी गई है। तालाबों का जीर्णोद्धारण करके उनका जीपीएस मार्क किया जा रहा है। अटल भूजल योजना से ट्यूबवेल आदि लगाने हेतु 6000 करोड़, जी हाँ 6000 करोड़ रुपए का बजट है। निःशुल्क बोरिंग, इसके अंतर्गत सीमांत एवं लघु किसानों को बोरिंग लगाने हेतु 10,000 रुपए दिए जाते हैं। कौन सी जगह है जहां जलवा है माशूक नहीं? कौन सी जगह है जहां जलवा है माशूक नहीं? शौक ए दीदार अगर है तो नजर पैदा कर। कुमारी तनीषा। अध्यक्ष महोदया, 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नाशाद है, 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नाशाद है, दिल पे रखे हाथ कहिए देश क्या आजाद है। अध्यक्ष महोदया, ये कैसा अमृतकाल है, हर कोई बेहाल है। उपलब्धियां कागजों पर है, जनता पायमाल है। रोटी सूखी पर भी टैक्स लगे हैं, प्याज रुलाती है और टमाटर लहू से लाल। महोदया, सरकार किसानों की आय दुगनी करने की बात करती है, मगर उसने चौगुनी कर दी, 8 गुनी कर दी है। टमाटर जो बजट सत्र में 25 रुपए किलो था, मानसून सत्र में 100 रुपए किलो हो गया है। महोदया, इस तरक्की से तो आम आदमी तंगहाल हो गया है। इससे काला बाजारी करने वालों, रुपयों की खेती करने वालों की तो तौबा रहा है। मैं सरकार का ध्यान महंगाई की विभीषिका की ओर आकृष्ट करना चाहती हूँ। टमाटर और प्याज गरीबों की रोटी का हिस्सा है। मैं खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री, जो कि खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं, ये आपूर्ति की कृपा कहाँ की है? अध्यक्ष महोदया, माननीय साथी, ये धरा का मामला है और घोर काली रात है। ये धरा का मामला है और घोर काली रात है। कौन जिम्मेदार है ये सभी को ज्ञात है। धन्यवाद अध्यक्ष जी। सबसे पहले मैं आपको एवं माननीय सभासदों को नमन करना चाहूंगा। अभी कुछ समय पहले हमारे माननीय विपक्षी मित्र ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में किसानों की अनेक समस्याओं के मुद्दों को उठाया। इसके समाधान में सबसे पहले मैं एक ऐसी चीज कहना चाहूंगा जिसका बड़े विस्तृतता के साथ स्पष्टीकरण हमारे मित्र श्री लक्ष्य ने कुछ ही समय पहले किया, और वो है कि
हमारी सरकार किसानों के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। मुझे नहीं लगता इस बात में कोई शक या संदेह किसी को भी है। किसानों की बेहतरी तो हमारी सरकार के मैनिफेस्टो में तक है, लेकिन एक ऐसी चीज है जिसे सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य अनुभव हुआ। कुछ वर्ष पहले हमारी सरकार ने एक किसान बिल प्रस्तावित किया। इसी बिल के माध्यम से हमारे देश के कई सारे किसानों की कई सारी समस्याएं का हल हो जाता और हमारे देश के एग्रीकल्चरल सेक्टर को बहुत बड़ा बढ़ावा मिलता। उस समय भी कुछ चंद जनता पर बरगलाने वाले, बवाल मचाने वाले लोग आज हमसे किसानों की बेहतरी पर सवाल कर रहे हैं। विपक्षी मित्र ने हमें हमारी सरकार को एक डबल स्टैंडर्ड्स की सरकार बुलाया, पर अगर आप मुझसे पूछे तो असली डबल स्टैंडर्ड्स तो ये है। वो जो हाथों में घड़े उठाए हैं, वो जो आग बुझाने आए हैं, इन्हीं हाथों ने तो आग बुझाई थी। मुझे संसद का समय व्यर्थ करने में कोई खास दिलचस्पी नहीं, तो अपने मुद्दे पर। हमारी सरकार ने किसानों की अनेक समस्याओं के समाधान में एक 11 सूत्रीय कार्य योजना बनाई है। इसी कार्य योजना के अंतर्गत 11 सूत्र आते हैं, जिन्हें मैं आप सभी के सामने पेश करता हूं। नंबर एक, अनाज का भंडारण एवं विक्रय की व्यवस्था। शायद ये बात आप ना जानते हो, पर एक मामूली आम किसान की सबसे बड़ी समस्या अनाज का भंडारण एवं विक्रय है। इसे ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार देश के कोने कोने में ग्राम पंचायती स्तर पर सरकारी क्रय केंद्र एवं वेयर हाउस स्थापित कर रही है। हमारा यही लक्ष्य है कि हम वर्ष 2026 तक हम देश के हर एक गांव में वेयर हाउस एवं क्रय केंद्र स्थापित करेंगे। नंबर दो, खेती, फल एवं बागवानी के लिए विशेष जोन का निर्माण किया जा रहा है। नंबर 3, खाद्य एवं फल उद्योगों का केंद्र सरकार द्वारा प्रशिक्षण। नंबर 4, किसानों की सहायता के लिए सचल किसान सहायता केंद्र की स्थापना, जहां पे किसान अपनी समस्याओं को दर्ज करवा सकते हैं और उसका उचित समाधान उन्हें दिया जाएगा। नंबर 5, भूमि सुधार एवं मिट्टी के स्वास्थ्य की जांच हेतु निःशुल्क सामग्री उपलब्ध करवाना। और नंबर 6, फसल चक्र अपनाकर किसानों को प्रोत्साहन एवं सहायता देना। और नंबर 7, मिलेट उत्पादन को फिर से प्रचलित करवाने के लिए निःशुल्क उन्नतशील बीज प्रदान करना। शायद आप सब ये बात जानते होंगे कि हमारी सरकार मिलेट को फिर से प्रचलित करवाना चाहती है। अगर ये काम कर गया तो ये दोनों किसान बेजमीन के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकता है। नंबर 8, एक स्टेशन एक उत्पाद की योजना को बढ़ावा देना। नंबर 9, फुटकर फल एवं सब्जी के विक्रय हेतु ई प्लेटफॉर्म का निर्माण। आज इस देश में एक ऐसा गांव नहीं है जहां पर ब्रॉडबैंड कनेक्शन ना हो, अतः इस देश का हर एक किसान इस योजना से लाभान्वित हो सकता है। नंबर 10, किसान एवं फसल की सुरक्षा हेतु कृषि बीमा, फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड इत्यादि ऐसी कई सारी योजनाएं। और नंबर 11, ई टेक्नोलॉजी जैसे SMS, रेडियो, सोशल मीडिया इत्यादि के माध्यम से कृषि प्रगति का प्रचार। तो ये थी हमारी 11 सूत्रीय कार्य योजना। अभी अध्यक्ष जी, किसान एकमात्र ऐसा जीवी है जिसे जमीन एवं आसमान दोनों चुनौतियां प्रदान करती है, और वो किसान इन चुनौतियों से लड़कर बाहर निकल आता है। अंत में मैं अपने विपक्षी मित्रों से यही एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा, और वो है कि वे जुड़कर सच्चे मन से किसानों के विकास के संगी बने, क्योंकि आखिर किसान तो श्रमजीवी है। उसे सहानुभूति की नहीं बल्कि एक मंच की एवं मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है। उसके कंधे पे रहता हल है, मेहनत उसका प्रतिफल है। समस्या उसके लिए कुछ नहीं, क्योंकि खिलौना ही तो उसका हल है।
धन्यवाद। जय जवान जय किसान। Code for the citizen, the state shall endeavor to secure for its citizens a uniform civil code throughout the territory of India. And as it has been 76 long years since the framing of our Indian Constitution, and have different governance over the years to bring about this change. I'm confident enough that all the honorable members of this house, irrespective of the affiliations, will undoubtedly welcome this bill wholeheartedly. And though it eradicates the inequities in our long land to meet our justice proportionate. नियम संहिता एक समान, समता का सबको गुमान हो, हर मजहब का मान रहे पर पहला मजहब संविधान हो। The motion is moved. Honorable Speaker Madam, India has a diverse personal law because of our culture and tradition. A uniform civil code is ideal if and only if the population is uniform enough. Madam, I take pride in the fact that in our country we have more than 22 languages. Yes, I repeat, we have more than 22 languages recognized by our constitution. That each and every state of our country has its own cultural diversity. Every community in India, whether they are Hindu, Muslim, Sikh or Dalit, they have their own culture, their own tradition. This country celebrates the diversity of culture and religion. As of today, ma'am, we have more than 200 to 300 personal laws that exist in India. Hence, I oppose this bill. I oppose this bill that has serious reservation as to how the Honorable Minister can forcefully implement a plan in view of her main task, that is, involved in critical intentions weighted by different communities of this country. Madam, opposition to any proposal for a change is a universal truth. We have all become slaves to our convictions. If you want to move forward, don't look back. Madam, I want to inform the House that a series of deliberations and discussions were held at different levels. We are open to further discussions for the greater good of the nation. Madam, laws in our country are based on religion. In the past, there have been amendments to the laws for the Hindus and the Catholic communities as amendment required. Also for the Muslim community, laws have been amended in countries like Turkey and Iraq that follow Islam. I agree that the Muslim Marriage Act does indeed require amendment and reform. But one must remember that the family law is built on tradition, and tradition can only be changed from within the respective communities. Do it from outside by standing on some moral high horse and you will only and only create resentment. Madam, the Uniform Civil Code would be a drastic change in line of personal laws for many communities without doing any real good in the process. Hence, I would like to call upon Ms. Priya of my party, who is an expert in line of personal laws, and to give an in-depth coverage as why this bill should not be passed. कुमारी प्रिया, अध्यक्ष महोदय, इतिहास गवाह है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अनेक विवादों को सुलझाया है। ऐसा कोई भी प्रमुख कारण नहीं जिसके आधार पर कानून में बदलाव किया जाए। सम्मानित सदस्य बार बार शाहजेद प्रकरण का उदाहरण देकर पर्सनल लॉ
एवं कौम विशेष पर गैरवाजिब पाबंदी की मांग कर रहे हैं। सच्चाई तो यह है कि रूलिंग पार्टी के पास पर्याप्त मेंबर्स हैं जिससे वो इस बिल को पास करा सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन कहीं इस बिल से कई अमन पसंद हिंदुस्तानियों को धोखा तो नहीं दिया जा रहा। बहस का मुद्दा तो ये है कि इस बिल से देश की एकता को नुकसान न पहुंचे। इस बिल के जरिए पर्सनल लॉ बोर्ड को टारगेट न किया जाए। मैं जानना चाहती हूँ कि इस बिल को लाने में सरकार की क्या मंशा है। नफरत, तनाव और मजहबी भेदभाव पैदा करना इसका उद्देश्य न बने, कतई न बने। मैं इस तरह के किसी भी बिल का सपोर्ट करूंगी जो हिंदुस्तानी जनता को तरक्की की राह पर ले जाए। वतन की फिक्र कर नादान, मुसीबत आने वाली। वतन की फिक्र कर नादान, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों। तुम्हारी दास्तान भी नहीं होगी दस्तानों में। Yes, please. अध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जिन्होंने इस मुद्दे पर परिचर्चा के लिए समय दिया और हमें बहुत कुछ बताया सिखाया। मैं सदन को यह कहना चाहती हूँ कि सरकार ने इस बिल के सदुपयोग, दुरुपयोग और परिणामों पर व्यापक विचार करके प्रस्तुत किया है। इस बिल के इंट्रोडक्शन से विपक्ष व ऐसे देशवासी जो सोचते हैं कि सरकार ने इस बिल के एजेंडे से धोखा दिया है को विश्वास दिलाते हैं कि ऐसा नहीं है और उनसे चर्चा करने को तैयार है। Has your ministry arrived at some time frame? Speaker Madam, as the Minister said earlier in her discourse, the country has waited 76 full years to implement the thoughts of our founding fathers. Does it really need any further debates and arguments to ensure a smooth passage? But as my colleague said earlier, we are open to further debate on the issue at hand. But of course, in line with the Constitution and overall will expressed by the eminent jurist, social reformer and politician Dr. Baba Saheb Ambedkar, as well as that of Pandit Nehru. I hope we have answered all the points raised by the honourable members in the course of my deliberation and seek your cooperation in the implementation of this measure, which is being looked upon as a panacea to mitigate the seeming divide between our citizens due to Article 25 of our Constitution, which grants each and every individual the freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion, subject to public order, morality and health, and to other provisions. Thank you. कुमारी प्रणाली। अध्यक्ष महोदय, विधि मंत्री ने इस बिल को लाने के पीछे की मंशा का स्पष्टीकरण दिया। मैं